viewers, we stick to Gyanvapi coverage, which has had important developments happening from Varanasi to the topmost court of the country. In this order, Ajay Kumar Mishra, the court-appointed commissioner, was in fact sacked by the same court with immediate effect on charges of leaking information before the survey report was compiled and filed. Also, Vishal Singh, who was effectively assisting Ajay Kumar Mishra, would now submit the report, for which the date of May 19th, Thursday, has been kept by the Magistrates Court in Varanasi. Again, Ajay Pratap Singh will work under Vishal Singh. He was the third person who was part of the survey team, and now it's a two-member team, effectively including Ajay Pratap Singh and Vishal Singh. Ajay Kumar Mishra having been removed today on charges of leaking information. Moving on, even every report will be signed by Vishal Singh. Vishal Singh demands have been accepted and he has been given 2 days. So that's a development coming in from the Varanasi court, where during the proceedings, Ajay Kumar Mishra was sacked on charges of leaking information, and Vishal Singh and Ajay Pratap Singh, the two other court commissioners who were asked to assist Ajay Mishra, would now be in charge of the entire exercise, and they would be submitting the report over the next 2 days. The case to come up and heard on May 19th, Thursday, that is day after tomorrow. Ananya continues to stay with us. He was covering the Supreme Court proceedings. Ananya, the court has risen, but effectively putting a status quo on what's there on the ground in Varanasi, at the same time seeking more information. Ananya. Well, yes, Abhishek, a very, very clear order from the topmost court of the country, clearly stating that there shall be no entry of anybody on the place where the shivling was found. Secondly, the Muslims' right to pray in the mosque is not hindered. They can go in, they can pray, but not entering the shivling premises where the shivling was found. Apart from that, a very, very important observation from the topmost court, even after repeated requests by the Muslim side, the Supreme Court, the two judges bench headed by Justice D.Y. Chandrachud and also comprising Justice P.S. Narasimhan, has clearly said no to staying off the trial court order. The Muslim side was continuously saying that the Order 7 Rule 11 application is pending, and hence the trial court orders with regards to the survey and with regards to the commissioner's report being submitted shall be stayed immediately. But even after repeated requests, Abhishek, the court clearly said no, such a thing cannot happen. In fact, in a balancing act, the court has said that the place where the shivling was found shall be protected. The DM has been directed to ensure the protection of this place. The city police has been asked to provide adequate security and maintain the law and order situation in that area. Apart from that, in a balancing act, the Muslim side has been allowed to pray inside the mosque. And also a subsequent development in the Varanasi court, where a very, very important development took place, wherein one of the court commissioners who was heading this whole exercise was removed. Ajay Kumar Mishra was removed on the charges of leaking of information, and the two other commissioners would now be spearheading the exercise of submitting the report before the Varanasi court. And we'll have to wait and watch, Abhishek, as to what comes down into the report submitted by these two court commissioners, because it would be a very, very important aspect. And the same might also be given to the Supreme Court when the hearing takes place on Thursday, because remember that both the Varanasi court and the Supreme Court would be hearing the matter on May 19th, while the Supreme Court would be hearing the aspect of whether the trial court order and the whole proceedings in this matter shall be stayed or not. And the Varanasi court would in turn be hearing as to what has been recovered, what has come out in the excavation and the court commissioner's survey, and would go on with the Rule 711 application. And that would be a very, very crucial hearing. But then also in the Supreme Court, if any kind of an order comes in, it would definitely affect what happens in the trial court as well. Abhishek. Right, Ananya. Let's, on that note, listen to some legal voices, that of Anil, Vishal Singh and Madan Mohan Yadav, both in Varanasi, on the proceedings in the Magistrates Court today in the town. 2 दिन का समय हमने मांगा था। 2 दिन के समय माननीय न्यायालय ने दे दिया कि 2 दिन के समय में आप लोग रिपोर्ट दाखिल कर दें। कल की सुनवाई के लिए कल तारीख नियत है शायद 82 की सुनवाई के लिए, जो वादी पक्ष द्वारा दिया गया है।
उसकी सुनवाई के लिए, उससे हम लोगों से कोई मतलब नहीं है। हम लोगों को सिर्फ कमीशन की रिपोर्ट देनी है। 2 दिन का अवधि लिया गया है। अजय मिश्र को हटाने की क्या वजह थी? अब वो माननीय न्यायालय किन्हीं कारणों से असंतुष्ट। 2 दिन के समय की मांग की वो मंजूर कर लिया है। हाँ, स्वीकार कर लिया है माननीय न्यायालय ने। अगली रिपोर्ट पेश कौन करेगा? अगली रिपोर्ट इस लिहाज से कौन पेश करेगा? 19 तारीख को दाखिल होगी। 2 दिन की अवधि के बाद 19 हुआ ना, 19 मई निसंदेह। अब तक रिपोर्ट किसकी अध्यक्षता में पेश की जाएगी? यहाँ पे ये विशाल सिंह है उनकी। तो ये सहायक वकील कमिश्नर अजय प्रताप सिंह रहेंगे उनके साथ। उनके सहायक अजय प्रताप सिंह रहेंगे। जी। तो अब क्या उस पर उनका कोई रोल नहीं होगा जब रिपोर्ट पेश होगी? सर्वे रिपोर्ट किसका रोल? 12 तारीख के बाद अजय कुमार मिश्रा का। अजय कुमार मिश्र के कार्यप्रणाली पे यदि प्रश्न चिन्ह उठा है तो ये माननीय न्यायालय का विषय है। इस संदर्भ में मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, ये बात बताइए, जो मुस्लिम पक्ष ने जो आरोप लगाए थे, क्या वही आरोप के आधार पर हटाए गए क्या अजय मिश्रा? नहीं, ऐसा कोई विषय नहीं था। उनकी कार्य दुलमुल रवैया और कार्यप्रणाली सटीक न होना। पूर्वी दीवार की महत्वपूर्ण बातें हैं, उस पर क्या हुआ? अभी उस विषय पर माननीय न्यायालय विचाराधीन रखा इस विषय को। न्यायालय ने स्वीकार कर लिया है सुनवाई के लिए कि नहीं? सुनवाई के लिए है, वो माननीय न्यायालय के विचाराधीन विषय है। अभी इस पर कुछ नहीं। अजय कुमार मिश्रा को, चूंकि उनके सहयोगी आरपी मिश्रा मीडिया में सूचनाएं लीक कर रहे थे, ये आरोप विशाल सिंह ने रिटर्न एप्लीकेशन के द्वारा ऑनरेबल कोर्ट को बताई थी। तो ऑनरेबल कोर्ट ने ये कहा है, मैं लास्ट ऑपरेटिव पोर्शन पढ़ दे रहा हूं कि अतः प्रार्थना पत्र 79 ग इस आशा के साथ निस्तारित किया जाता है कि वकील कमिश्नर श्री अजय कुमार मिश्रा को तत्काल प्रभाव से कार्यमुक्त अर्थात हटाया जाता है। विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई की रिपोर्ट स्वयं दाखिल करेंगे। सहायक अधिवक्ता आयुक्त श्री अजय प्रताप सिंह विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह को के निर्देशन में कार्य करेंगे। अजय प्रताप सिंह स्वतंत्र रूप से कुछ भी नहीं करेंगे। दिनांक 12/5/22 के पश्चात की समस्त कमीशन कार्रवाई विशेष अधिवक्ता आयुक्त श्री विशाल सिंह के हस्ताक्षर से ही दाखिल होगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगाए 3 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 80 का प्रस्तुत किया गया है और वादनीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 82 का प्रस्तुत किया गया है। इन पर आपत्ति जी पूरे आदेश में जी जो 2 अहम बातें हैं जी 3 अहम बातें उसको एक एक करके बताइए। देखिए, पहली और सबसे गंभीर बात है कि ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि जो वकील कमिश्नर नियुक्त होते हैं उनका जिम्मेदारी बहुत होती है, उनका पद जो होता है वो लोक सेवक की बात होती है, तो उनको बहुत पारदर्शिता और ईमानदारी से कार्य करना चाहिए। चूंकि मिश्रा जी के जो सहयोगी हैं आरपी सिंह, वो तमाम इंस्ट्रक्शन के बाद भी सूचनाएं मीडिया में लीक कर रहे थे, इसलिए कोर्ट ने बहुत ही सख्त कार्रवाई करते हुए उनको तत्काल प्रभाव से कमीशन पद से हटा दिया है और वो कोई भी कमीशन रिपोर्ट दाखिल नहीं करेंगे। कोर्ट ने ये लायबिलिटी विशाल सिंह के ऊपर शिफ्ट कर दिया है और ये कहा है कि 12 तारीख से लेके जो 3 दिन कमीशन कार्रवाई चली है। विशाल सिंह अब एकमात्र व्यक्ति होंगे जो एक संयुक्त रिपोर्ट पेश करेंगे। नहीं, अजय प्रताप सिंह जो है उनके मार्गदर्शन में काम करेंगे। विशाल सिंह ही मेन रिपोर्ट दाखिल करेंगे, अजय प्रताप सिंह उनके सहयोगी। और दूसरी चीज, जो डीजीसी सिविल ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, वादी ने जो अभी एप्लीकेशन दिया था, उन पे आपत्ति इनवाइट की है। इसका मतलब सभी प्रतिपक्ष को उसकी कॉपी दी गई है, उस पर आपत्ति आएगी तब उसका डिस्पोजल ऑनरेबल कोर्ट करेगी।